Hello, students. In today's COVID-19 era, the biggest question everywhere is when we will discover vaccine. So today in this video, we are going to talk about vaccine. Now, what is vaccine? Vaccine is the introduction of disease-causing microorganism, that is germ or pathogen, in inactive form or in a dead form into the body. So our body can produce antibodies against it. यानी कि जब हमें पता है कि इससे हमें खतरा होने वाला है तो हम उस खतरे वाली जो सेना है उसके बिल्कुल मरे हुए कमजोर सैनिकों को आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि आपकी बॉडी को आइडिया लग सके कि इनके अगेंस्ट हमें किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है और वो प्रिपरेशन क्या होती है एंटीबॉडीज बनाने की. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, the first vaccine was discovered by Edward Jenner. He was a great scientist, and the first vaccine which was discovered, its name is BCG, which is used against tuberculosis. Now, what is full form of BCG? It is Bacillus calmette-guerin. Now, we have 4 kind of vaccine. Vaccine का जो introduction है, it is a great help. Because of vaccine, we are free from polio now. Because of vaccine only, we have a hope that we will free from COVID-19. Similarly, there are a lot of diseases like smallpox. Just because of vaccine of smallpox, we all are free from smallpox. Even हमारी जनरेशन में, आपकी जनरेशन में smallpox को कोई जानता भी नहीं है. So, in vaccine, we introduce disease-causing microorganism in your body, so your body can prepare antibodies against it. Now, there are 4 kind of vaccine. Number 1 is kill germs. In this disease, we introduce completely kill germs into your body. For example, in case of typhoid, the vaccine used against typhoid is TAB. TAB. It is typhoid antibacteria. The another one example is Salk. Salk is a vaccine which is used against polio, and it was named after the scientist Mr. Salk who discovered this vaccine. आप लोगों ने सुना होगा ना 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो की 2 बूंद पिलाई है, उसको हम OPV भी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन. ओरल पोलियो वैक्सीन का मतलब उस वैक्सीन को आप मुंह के थ्रू खाते हैं. There are certain vaccine in which you have to inject it. So in polio, you have to take oral medicine, and that's why it is known as OPV. And because of that vaccine only, we are now free from polio. The another one is living and weakened germs. In this, we introduce living जिंदा लेकिन वीकेंड कमजोर जर्म्स को आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, सो यू कैन प्रिपेयर एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ मीजल्स एंड इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज BCG जो हम वैक्सीन यूज करते हैं. तो BCG यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, एंड BCG का फुल फॉर्म क्या है? Bacillus calmette-guerin. It is very important question. Another one is living and fully virulent, मतलब बिल्कुल जिंदा और खूब ताकतवर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल पॉक्स के केस में हम आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस करा पाते हैं. द रीजन इज वी आर अवेयर दैट वी पीपल आर नाउ completely immune for smallpox. तो कितना भी जिंदा तगड़ा सा मतलब smallpox का वायरस आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है. That's why we are able to introduce in such a way. The another one is toxoid. In case of toxoid, we introduce toxic material in your body, like in case of diphtheria, in case of pertussis. So your body produce antitoxin against it. आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन बना लेती है. Clear? Now, so there are 4 kind of vaccine. One is fully virulent vaccine in case of smallpox, kill germs in case of typhoid, and rabies के केस में भी हम kill germs वाला वैक्सीन यूज करते हैं. Another one is living but weakened in case of measles and BCG, tuberculosis, and the another one is toxoid और fully virulent जो हमने डिस्कस किया. Now, there are certain terms which you have to learn. First is DPT.
DPT is a triple vaccine. Triple vaccine means this DPT vaccine is used against three diseases. One is diphtheria, one is pertussis and one is tetanus. इन 3 डिजीज के अगेंस्ट हम DPT को यूज करते हैं. टैब is typhoid antibacterial. It is used against typhoid. Similarly, Salk, it is used against polio. BCG, this is Bacillus calmette-guerin, and it is used against tuberculosis. Now, one more term you have to learn, that is serum. If we compare the पहले समझते हैं कि सीरम क्या होता है. सीरम में हम क्या करते हैं, we introduce disease causing microorganism into a body. जनरली ये एनिमल्स के केस में किया जाता है. एनिमल की बॉडी में हम उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं माइक्रोब्स को उनकी बॉडी में. देन देयर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जैसे हमारे साथ में होता है. When we are suffering from chickenpox, our body produce antibodies against chickenpox, and वो chickenpox के antibodies हमारी बॉडी में entire life रहने वाले हैं. Similarly, हम हॉर्स के केस में करते हैं. इन केस ऑफ हॉर्स वी इंट्रोड्यूस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हॉर्स. दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. देन वी एक्सट्रैक्ट एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर बॉडी. उनके यहाँ गले में यहाँ पर हम कट लगाते हैं और यहाँ पर बेसिकली लिम्फोसाइट होते हैं. फ्रॉम दोज लिम्फोसाइट वी एक्सट्रैक्ट एंटीबॉडीज. देन वी प्रिपेयर स्मॉल सैंपल्स ऑफ एंटीबॉडीज and then we introduce into your body whenever it is required. अब दोनों में यदि हम बेसिक डिफरेंस समझें वैक्सीन एंड सीरम में, सो इन केस ऑफ वैक्सीन वी गॉट active immunity because your body is producing antibodies. In case of serum, we are getting passive immunity because your body is not producing antibodies. You are getting already prepared antibodies. Clear? Now, यदि हम हेल्थ एड्स के बारे में बात करें तो देर आर 4 टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1 इज एंटीसेप्टिक, नंबर 2 इज डिसइंफेक्टेंट, देन एंटीबायोटिक्स एंड देन वैक्सीनेशन. अब इनको बहुत अच्छे से समझिए. एंटीसेप्टिक एंड ऑल 4 आर यूज्ड अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So in examination, if you are writing that antiseptic is used chemical which are used against to kill microorganism, तो मैं आपको मार्क्स नहीं देने वाली हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वैक्सीन. तो आपको पर्टिकुलर रहना डेफिनेशन के लिए. एंटीसेप्टिक आर द माइल्ड केमिकल्स, दे आर द सॉफ्ट केमिकल्स विच आर अप्लाइड ऑन द स्किन, जो स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं टू किल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल टिंक्चर आयोडीन, फॉर एग्जाम्पल बोरिक एसिड. आपको ये दोनों नाम बहुत कॉमन समझ नहीं आएंगे. मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल डिटॉल. डिटॉल इज एंटीसेप्टिक, सेवलॉन इज एंटीसेप्टिक, बोरोलिन, बोरोप्लस, बेटनोवेट, दे ऑल आर एंटीसेप्टिक. हमारी बहुत सारे ऐसे ऑइंटमेंट्स हैं जिनके अंदर हम एंटीसेप्टिक को यूज करते हैं, लेकिन दे ऑल आर ब्रांड नेम, सो दे आर नॉट द एग्जाम्पल. आप अपने समझने के लिए इसको यूज कर सकते हो, बट इन एग्जामिनेशन you have to write down the product. That product is tincture of iodine, that is a boric acid. ठीक है. और इसके अलावा आयोडीन सॉल्यूशन है, कार्बोलिक एसिड है, that is also used as a antiseptic. 2 चीजें याद रखनी है. एंटीसेप्टिक सॉफ्ट केमिकल है, एंटीसेप्टिक इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. ये 2 मेन बातें उसमें होनी चाहिए. नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट इज यूज्ड अगेंस्ट disease causing microorganism to kill them, but they are used in spot areas. For example, phenyl we use in toilets, we use I mean floor cleaning के लिए use करते हैं. Similarly, Lysol we use in toilets, that is also a disinfectant. And lime we use in different areas, that is also a disinfectant. लाइम में आपने देखा होगा, जैसे आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि कोई शादी ब्याह होता है या कोई बड़े नेता आते हैं, कुछ ऐसा गैदरिंग होता है, देन दे मेक डिजाइन्स और लाइनिंग फ्रॉम लाइम, बिकॉज लाइम जो है वो सिर्फ डिजाइन बनाने के लिए नहीं था, दैट इज टू मेक दैट एरिया माइक्रोब्स फ्री, उसके लिए भी था. तो जाने अनजाने हम कहीं ना कहीं अपना प्रोटेक्शन कर ही रहे हैं. Then we have antibiotics. Antibiotics, please be particular for the definition. Antibiotics are the chemicals derived from certain microorganism, not all microorganism, only bacteria and fungi,
to kill disease causing microorganism. Now इनकी डिस्कवरी बड़ी मतलब रहस्यमय सी है. वी वर नॉट डिस्कवरिंग, मतलब हम कभी भी एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर नहीं कर रहे थे. एक्चुअली द साइंटिस्ट हु वाज वर्किंग ऑन द एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट ही वाज प्रिपेयरिंग सम सैंपल. उन्होंने लैब में कुछ सैंपल रखे और उन सैंपल में उन्होंने देखा कि ABCD 4 सैंपल हैं, एंड आउट ऑफ दीज 4 सैंपल वन ऑफ द सैंपल इज नॉट ग्रोइंग. वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं कर रहे हैं. देन ही टेस्ट कि वाई दे आर नॉट ग्रोइंग. वो तो एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर ही नहीं कर रहे थे, वो तो उसको टेस्ट कर रहे थे कि वो क्यों नहीं ग्रो कर रहा है. देन ही फाउंड दैट दिस सैंपल इज हैविंग सर्टेन फंजाई. देन ही फाउंड कि दिस फंजाई इज फ्रॉम द पेंसिलियम नोटेटम. फ्रॉम हियर ही कंक्लूड कि भाई यदि ये फंजाई पेंसिलियम नोटेटम इट इज नॉट अलाउइंग टू ग्रो माई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मैं अपने किसी काम के लिए यूज कर रहा था, तो ये तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ग्रो नहीं करने देंगे. तो वाई वी कैन नॉट यूज देम एज अ एंटीबायोटिक्स. तो एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट. और वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म थे? वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे. सो बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं, पेंसिलिन बहुत कॉमन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत कॉमन है. पेंसिलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम फंजाई एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया. इसके बाद आपका है द वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. इन वैक्सीनेशन वी इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक काइंड ऑफ वैक्सीन इन योर बॉडी to kill disease causing microorganism. So till this we have discussed all the defense mechanism to protect against microorganism. In next video we are going to discuss about certain health organization. So devise all these vaccines and take care. Hope कि soon we can have vaccine against COVID-19. और आपको समझ भी आया होगा कि हमें कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन को यूज करना या खोजना क्यों जरूरी है. सो टेक केयर एंड गुड बाय.